Hello everyone. Today I discuss with you how to create online test using Google Form. This is a very simple and easy way. I will explain all process step by step. Please note it. So first step is sign in with Google account. For this purpose, I open the Internet Explorer. Website is a google.co.in. Then use the option sign in. Log in with your account. Using your email ID and password. After sign in, click on Google Apps button. Select the option Drive. This is the interface of Google Drive. Now, click on a new button. Select the option More. Then select option Google Forms. This is the interface of our Google Form where we create an online test. So first set the title of the online test, like I like, right? Then click on a customize theme for setting background colors, any theme colors, font style, etc. After setting these options, now we add the question. See the option where we add it. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਯੋਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਅਵਰ ਫਾਈਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਨ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. So first here we write a question. I use the copy paste option. Control C and Control V. Then set the option for answers. After that, this is the most important thing. Click on setting button. Select the option Quizy and select option make this a quiz. Click on a save button. जो भी डाटा तुसी इत्थे प्रिपेयर करोगे वो ऑटोमेटिकली सेव्ड इन अ गूगल ड्राइव. So this is we prepare a question and side by side we prepare an answer key for preparing an answer key. Click on answer key. Select the right answer and also set the point for answer. ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ. ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਅ ਡਨ ਬਟਨ. ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ. ਨਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ
enter our next question, click on this button, plus button, thumbnail is a add question. next question add हो गया. So ਅਸੀਂ file ਦੀ help ਨਾਲ next question, this is the easiest way कि we prepare a file in advance for question list. Now here we set the option for answer. Set the option for answer key. Also set the answer point. Same thing. Then click on a done. So this is the process how to add a question. It depends on you how many questions you want to enter. And now we want to see the preview. Preview मतलब कि किमें ਤੁਹਾਨੂੰ दिखेगा क्वेश्चन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट ਨੂੰ अटैम्प्ट ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਗੇ. Click on a preview button, that is like a I button. So this is a preview. देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ स्टूडेंट ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, that is a must. So ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂजेस ਕਰਾਂਗੇ. मैं स्टूडेंट के नेम तो रोल नंबर की ऑप्शन भी सैट करना चाहती हाँ. वो भी एड अ क्वेश्चन ही सैट होएगा. क्लिक ऑन एड क्वेश्चन. एंड वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो असी क्वेश्चन की सैटिंग करते हैं तो असी सैट कर सकते हैं कि असी किस टाइप का क्वेश्चन जोड़ा है ऑनलाइन टेस्ट तैयार करना. मल्टीपल चॉइस, चैक बॉक्स, पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर. This is according to our requirement. So select मैं नाम तो रोल नंबर की सैटिंग करनी है. आई select the option short answer. ध्यान नाल देख लो कि I select the option short answer, and in a question I write a roll number. ठीक है. इसके लिए असी आंसर की पॉइंट्स नहीं सैट करने, रिक्वायर्ड असी करना. ओके. देखो हुण ये की होया कि क्वेश्चन मेरा पहला एंटर होया होया तो मैं बाद रोल नंबर कर रही हाँ. तो तुसीं इहनूं की कर सकते हो, सिंपल ड्रैग करके अप एंड डाउन कर सकते हो. देखो रोल नंबर तो मेरा पहला सैटिंग हो गई. ठीक है जी. सो नेक्स्ट सेम थिंग, वी वांट टू एंटर अ नेम ऑफ स्टूडेंट्स. सेम एड क्वेश्चन. Here set the name of student. Then option is a short answer. Answer key point 0 and required is a on. Suppose कि मैं क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर कर ली. ठीक है. Then I want to share this online test with the student. वो किमें करना? Same process. Click on a preview button. तो देखो हुण इत्थे रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट भी आ गए, क्वेश्चन लिस्ट भी आ. Copy this link and share among the students. Okay, I repeat, copy this link and share among the students. Also save this link for future purpose. For example, as a student मैं यूज़ कर रही हूँ, I paste that link. ठीक है. सो मैं टेस्ट के अपीयर हो रही है. मैं अपना रोल नंबर एंटर किया, एंटर माई नेम,
क्वेश्चन के आंसर दे रही हाँ एंड लास्ट आई सबमिट माई टेस्ट। सो नेक्स्ट इज द ऑप्शन व्यू स्कोर। स्टूडेंट्स अपना स्कोर भी चेक कर सकता। तो देखो लिखा है योर रिस्पॉन्सेज हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जो भी स्टूडेंट ने आंसर देते हैं वो रिकॉर्डेड मतलब सेव हो गए। सो व्यू स्कोर, देखो स्टूडेंट को पता लग गया कि ਉਹਦੇ मैं 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट ਕੀਤੇ ਸੀ, 2 सही ने ਤਾਂ टोटल मार्क्स 2 ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ पॉइंट्स भी 2 मिले ने। ठीक है जी। सो दिस इज़ आ स्टूडेंट साइड्स। नाउ साढ़े स्टूडेंट्स ने टैसट देता, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਰੀ ਲਿਸਟ ਵੀ, ਸਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਅਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ 1 ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਔਨ 3 ਡਾਟਡ ਬਟਨ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। Response destination, then here is the option create a new spreadsheet or select existing spreadsheet। अगर तो ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ existing ਲਓਗੇ, अगर new ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ new ਲਵਾਂਗੇ। then click on a create button। ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੈ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਸੇਵ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एक बार रिफ्रेश कर लो। सो रिफ्रेश करने तो बाद तुसीं देखो कि सानू ये एक्सेल शीट दिख रही है गूगल ड्राइव दे विच। तो क्लिक ऑन दिस फाइल। So when we open the Excel file, so this is the Excel file where all data is stored। टाइम भी आ रहा, स्कोर भी आ रहा, रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्वेश्चन लिस्ट with the answer। So this is the easiest way for creating a online test। जो भी तुसी डाटा, आई रिपीट, जो भी तुसी गूगल फॉर्म क्वेश्चनियर बनाओगे, स्प्रैडशीट ਦੇ डाटा रिस्पॉन्स स्टोर होंगे, वो सारा डाटा ਤੁਹਾਡਾ गूगल ड्राइव ਤੇ सेव होएगा। At last, I think this feature has a main 3 advantages। We can easily create online tests, save time and easily evaluate the result of the students। So I hope you like this video and use this option for creating online tests for students। Thank you।